अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन सीरीज़ के 7वें लेसन में खुश आमदीद और वेलकम। Lesson 07. The use of force. ताकत का इस्तेमाल। A physician is summoned to make a house call on a family with whom he has had no prior contact. He quickly sizes up the situation. The household is poor but clean. The patient is a female child whose parents are nervously concerned, dependent on, yet distrustful of the doctor. The child's beauty and penetrating stare make an immediate impression on him. Concerned that diphtheria may be the cause of illness, he uses his customary professional manner to determine whether or not the child has a sore throat. But the child will have none of it and clawed instinctively for my eyes. The attempt at an examination rapidly escalates into a physical battle as the physician, convinced that it is crucial to see the child's throat and feeling that I must get a diagnosis now or never, becomes ever more enraged and forceful while the girl continues to resist with all her strength, and the parents are in an agony of fear for her health and embarrassment over her behavior. This is no longer a professional encounter. The doctor admits at the beginning of the struggle to having fallen in love with the savage brat and recognizes that he is behaving irrationally. The closing sequence could as easily be depicting a rape as a forced throat examination. तारुफ। एक मुआलिज को ऐसे ख़ानदान से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है जिसके साथ उसका पहले से कोई राबता नहीं था। वो तेज़ी से सूरत हाल का अंदाज़ा करता है। घर गरीब लेकिन साफ़ सुथरा है। मरीज़ एक लड़की बच्ची है जिसके वालिदैन घबराहट से परेशान हैं। डॉक्टर पर मुनहसर थे, फिर भी डॉक्टर पर एतमाद नहीं कर रहे थे। बच्चे की खूबसूरती और खा जाने वाली नज़र ने उस पर फौरी असर डाला। इस बारे में खन्नाक बीमारी की वजह हो सकता है। वो अपने रवायती पेशेवराना अंदाज का इस्तेमाल करते हुए इस बात का तयन करता है कि आया बच्चे के गले में खराश है या नहीं, लेकिन बच्ची के पास इसमें से कुछ भी नहीं होगा और उसने इज़्तिरारी अंदाज में मेरी आंखों पर पंजे मारे। मुआयने की कोशिश तेज़ी से जिस्मानी जंग में बदल जाती है, जैसा कि डॉक्टर इस बात पर कायल है कि बच्ची के गले को देखना बहुत ज़रूरी है और ये महसूस कर रहा है कि मुझे अभी या फिर कभी नहीं तशख़ीस करनी चाहिए। लड़की पहले से ज़्यादा मुश्तइल और ज़बरदस्त हो जाती है, अपनी पूरी ताकत के साथ मुज़ाहमत जारी रखे हुए है और वालिदैन उसकी सेहत के लिए खौफ और उसके रवैये पर शर्मिंदगी के आलम में हैं। अब ये पेशा वाराना मुलाकात नहीं रही। डॉक्टर जद्दोजहद के आगाज़ में तस्लीम करता है कि वहशी लड़की से मोहब्बत हो गई थी और तस्लीम करता है कि वो गैर माकूल सलूक कर रहा था। आखिर में होने वाली ज़बरदस्ती के मुआयने की तफसील किसी संजीदा जुर्म की तफसील से कम नहीं है। Please come down as soon as you can, my daughter is very sick. When I arrived, I was met by the mother, a big startled-looking woman, very clean and apologetic, who merely said, "Is this the doctor? And let me in." In the back, she added, "You must excuse us, doctor, we have her in the kitchen where it is warm. It is very damp here sometimes." The child was fully dressed and sitting on her father's lap near the kitchen table. He tried to get up, but I motioned for him not to bother, took off my overcoat and started to look things over. I could see that they were all very nervous, eyeing me up and down distrustfully. As often, in such cases, they weren't telling me more than they had to. It was up to me to tell them. That's why they were spending $3 on me. प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। मेरी बेटी बहुत बीमार है। जब मैं पहुंचा तो मेरी मुलाकात वालदा से हुई, एक बड़ी चौंकने वाली औरत, बहुत साफ़ सुथरी और माजरत ख़्वाह थी, जिसने सिर्फ इतना कहा, "क्या ये डॉक्टर है?" और मुझे अंदर आने दिया। "पीछे है," उसने मज़ीद कहा। "माफ़ कीजिएगा डॉक्टर, हमारे पास वो किचन में है जहाँ गर्म है। यहाँ कभी कभी बहुत नमी होती है।" बच्ची पूरी तरह तैयार थी और बावर्ची खाने की मेज़ के पास अपने बाप की गोद में बैठी थी। बाप ने उठने की कोशिश की,
लेकिन मैंने उसे परेशान ना होने का इशारा किया। अपना ओवरकोट उतारकर चीज़ों को देखने लगा। मैं देख सकता था कि वो सब बहुत घबराए हुए थे, मुझे शक की निगाह से देख रहे थे। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलात में होता है, वो मुझे उससे ज़्यादा नहीं बता रहे थे जितना कि उन्हें बताना था। ये मुझ पर मुनहसर था कि मैं उन्हें बताऊं, इसीलिए वो मुझ पर $3 खर्च कर रहे थे। The child was fairly eating me up with her cold, steady eyes, and no expression to her face whatever. She did not move and seemed, inwardly, quiet, an unusually attractive little thing, and as strong as a heifer in appearance. But her face was flushed, she was breathing rapidly, and I realized that she had a high fever. She had magnificent blonde hair, in profusion. One of those picture children often reproduced in advertising leaflets and the photogravure sections of the Sunday papers. She's had a fever for 3 days, began the father, and we don't know what it comes from. My wife has given her things, like people do, but it don't do no good. And there's been a lot of sickness around. So we thought you'd better look her over and tell us what is the matter. As doctors often do, I took a trial shot at it as a point of departure. Has she had a sore throat? बच्ची अपने तासरात से आरी आंखों से खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी और चेहरे पर कोई तासर नहीं था। वो साकिन थी और अंदर से खामोश दिखाई देती थी, एक गैर मामूली तौर पर पुरकशिश छोटी सी चीज़ और बाहर से एक गाय की तरह मजबूत। लेकिन उसका चेहरा झुलस गया था, वो तेज़ी से सांस ले रही थी और मैंने महसूस किया कि उसे तेज़ बुखार है। उसके शानदार सुनहरे बाल थे, उन तस्वीरों में से एक थी जो अक्सर इश्तिहारी किताबचे और इतवार के अखबारात के फ़ोटोग्राफ़ी वाले हिस्सों में नज़र आते हैं। उसे 3 दिन से बुखार है, वालिद ने शुरू किया, और हम नहीं जानते कि ये किस चीज़ से आता है। मेरी बीवी ने उसे चीज़ें दी हैं, आप जानते हैं, जैसे लोग करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आस-पास बहुत सारी बीमारी है, तो हम नहीं चाहते कि आप उसे देखें और हमें बताएं कि क्या मामला है। जैसा कि डॉक्टर अक्सर करते हैं, मैंने रवानगी के नुक्ता के तौर पर उस पर ट्रायल शॉट लिया। क्या इसके गले में खराश है? Both parents answered me together, no. No, she says her throat don't hurt her. Does your throat hurt you? Added the mother to the child. But the little girl's expression didn't change, nor did she move her eyes from my face. Have you looked? I tried to, said the mother, but I couldn't see. As it happens, we had been having a number of cases of diphtheria in the school to which this child went during that month, and we were all, quite apparently, thinking of that, though no one had as yet spoken of the thing. Well, I said, suppose we take a look at the throat first. I smiled in my best professional manner, and asking for the child's first name I said, come on, Matilda, open your mouth and let's take a look at your throat. दोनों वालिदैन ने एक साथ मुझे जवाब दिया, नहीं, नहीं, वो कहती है कि उसके गले को तकलीफ़ नहीं है। क्या आपके गले में दर्द है? माँ ने बच्ची से पूछा, लेकिन छोटी लड़की के तासरात में कोई फ़र्क नहीं आया और ना ही उसने मेरे चेहरे से नज़रें हटाईं। तुमने देखा है? मैंने कोशिश की, माँ ने कहा, लेकिन मैं नहीं देख सकी। जैसा कि ऐसा होता है कि हमारे पास स्कूल में खन्नाक के कई केसेस थे जिसमें इस महीने के दौरान ये बच्चा गया था और हम सब बिल्कुल बज़ाहिर उसके बारे में सोच रहे थे, हालांकि अभी तक किसी ने इस चीज़ के बारे में बात नहीं की थी। ठीक है, मैंने कहा, फ़र्ज़ करें हम पहले गले पर नज़र डालें। मैं अपने बेहतरीन पेशावराना अंदाज में मुस्कुराया और बच्ची का पहला नाम पूछते हुए मैंने कहा, आओ मैथिल्डा, अपना मुंह खोलो और अपना गला दिखाओ। Nothing doing. Come on, I coaxed, just open your mouth wide and let me take a look. Look, I said, opening both hands wide, I haven't anything in my hands. Just open up and let me see. Such a nice man, put in the mother. Look how kind he is to you. Come on, do what he tells you to. He won't hurt you. At that I ground my teeth in disgust. If only they wouldn't use the word hurt, I might be able to get somewhere.
But I did not allow myself to be hurried or disturbed, but speaking quietly and slowly, I approached the child again. कुछ नहीं कर रहा। ओह चलो, मैंने कहा, बस अपना मुंह खोलो और मुझे एक नज़र डालने दो। देखो, मैंने दोनों हाथ चौड़े करते हुए कहा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ज़रा खोलो और मुझे देखने दो। इतना अच्छा आदमी, माँ बोली। देखो वो तुम पर कितना मेहरबान है। चलो वो करो जो वो तुम्हें कहता है, वो तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा। इस पर मैंने नफ़रत से दांत पीस लिए। अगर सिर्फ वो लफ्ज़ ज़ख्मी का इस्तेमाल ना करें तो मैं कहीं पहुंच सकता हूं। लेकिन मैंने अपने आप को जल्दबाजी या परेशान होने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि खामोशी और धीरे से बोलते हुए मैं दोबारा बच्ची के करीब पहुंचा। As I moved my chair a little nearer suddenly, with one cat-like movement, both her hands clawed instinctively for my eyes, and she almost reached them too. In fact, she knocked my glasses flying and they fell, though unbroken, several feet away from me on the kitchen floor. Both the mother and father almost turned themselves inside out in embarrassment and apology. "You bad girl," said the mother, taking her and shaking her by one arm. "Look what you've done." "The nice man." "For heaven's sake," I broke in. "Don't call me a nice man to her. I'm here to look at her throat on the chance that she might have diphtheria and possibly die of it. But that's nothing to her. Look here," I said to the child, "we're going to look at your throat. You're old enough to understand what I'm saying. Will you open it now, by yourself, or shall we have to open it for you?" जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा करीब किया, अचानक एक बिल्ली जैसी हरकत के साथ उसके दोनों हाथ मेरी आंखों पर फितरी तौर पर पंजों की तरह लगे और वो करीब करीब आंखों तक पहुंच भी गई। दर हकीकत उसने उड़ते हुए मेरी ऐनक को खटखटा दिया और वो किचन के फर्श पर मुझसे कई फीट दूर गिरी, अगरचे टूटी नहीं थी। माँ और बाप दोनों ने इंतहाई शर्मिंदगी से माफ़ी मांगते रहे। तुम बुरी लड़की, माँ ने उसे लेकर एक बाजू से हिलाते हुए कहा। देखो तुमने क्या किया है। अच्छा आदमी, खुदाया, मैंने बात काटी, मुझे इसके लिए अच्छा आदमी मत कहो। मैं इस मौका पर उसके गले को देखने आया हूँ कि उसे खन्नाक है और मुमकिन तौर पर उसकी मौत हो सकती है, लेकिन ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। इधर देखो, मैंने बच्ची से कहा, हम तुम्हारा गला देखने जा रहे हैं। आपकी उम्र इतनी है कि आप समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप इसे खुद खोलेंगी या हमें आपके लिए खोलना पड़ेगा? Not a move. Even her expression hadn't changed. Her breaths, however, were coming faster and faster. Then the battle began. I had to do it. I had to have a throat culture for her own protection. But first I told the parents that it was entirely up to them. I explained the danger, but said that I would not insist on a throat examination so long as they would take the responsibility. "If you don't do what the doctor says, you'll have to go to the hospital," the mother admonished her severely. "Oh yeah?" I had to smile to myself. After all, I had already fallen in love with the savage brat. The parents were contemptible to me. In the ensuing struggle, they grew more and more abject, crushed, exhausted, while she surely rose to magnificent heights of insane fury of effort bred of her terror of me. बच्ची की तरफ से कोई हरकत नहीं, यहाँ तक कि उसके तासरात भी नहीं बदले थे। ताहम उसकी सांसें तेज़ से तेज़ आ रही थीं। फिर लड़ाई शुरू हो गई। मुझे ये करना पड़ा। मुझे उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गले की ख़राबी को देखना पड़ा। लेकिन पहले मैंने वालिदैन को बताया कि ये मुकम्मल तौर पर उन पर मुनहसर है। मैंने ख़तरे की वज़ाहत की, लेकिन कहा कि मैं उस वक्त तक गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूँगा जब तक वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। अगर आपने डॉक्टर के कहने पर अमल नहीं किया तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। माँ ने उसे सख्त नसीहत की। अरे हाँ, मुझे खुद से मुस्कुराना पड़ा। आखिर मैं तो पहले ही वैसी छोकरी से प्यार कर चुका था। वालिदैन मेरे लिए हकीर थे। बढ़ती जद्दोजहद में वो और ज़्यादा जलील, कुचले, थके हुए होते गए, जबकि बच्ची यकीनन मेरी दहशत की वजह से गुस्से की शानदार बुलंदियों पर पहुंच गई। The father tried his best, and he was a big man, but the fact that she was his daughter, his shame at her behavior and his dread of hurting her made him release her just at the critical times when I had almost achieved success, till I wanted to kill him. But his dread also that she might have diphtheria made him tell me to go on, though he himself was almost fainting, while the mother moved back and forth behind us, raising and lowering her hands in an agony of apprehension.
Put her in front of you on your lap, I ordered, and hold both her wrists. But as soon as he did, the child let out a scream. Don't, you're hurting me. Let go of my hands. Let them go, I tell you. Then she shrieked terrifyingly, hysterically. Stop it. Stop it. You're killing me. बाप ने अपनी पूरी कोशिश की और वो बड़ा आदमी था, लेकिन हकीकत यह है कि वो उसकी बेटी थी। उसके रवैये पर उसकी शर्मिंदगी और उसे तकलीफ़ पहुंचाने के खौफ ने उसे उस नाजुक वक्त में छोड़ दिया जब मैं तकरीबन कामयाबी हासिल कर चुका था, यहाँ तक कि मैं उसे मारना चाहता था। लेकिन उसका ये खौफ भी था कि शायद उसे खन्नाक हो गया हो। उसने मुझसे कहा कि चलो चलो, हालांकि वो खुद तकरीबन बेहोश हो रहा था, जबकि माँ खौफ के आलम में अपने हाथ उठाकर नीचे करती हुई हमारे पीछे पीछे चली गई। उसे अपनी गोद में अपने सामने रखो, मैंने हुक्म दिया, और उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ो। लेकिन जैसे ही उसने किया, बच्ची की चीख निकल गई, मत करो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, मेरे हाथ छोड़ दो, उन्हें जाने दो, मैं तुम्हें कहती हूँ। फिर वो खौफनाक अंदाज में चीख उठी, रोको, उसे रोको, तुम मुझे मार रहे हो। Do you think she can stand it, doctor? Said the mother. You get out, said the husband to his wife. Do you want her to die of diphtheria? Come on now, hold her, I said. Then I grasped the child's head with my left hand and tried to get the wooden tongue depressor between her teeth. She fought, with clenched teeth, desperately. But now I also had grown furious at a child. I tried to hold myself down, but I couldn't. I know how to expose a throat for inspection. And I did my best. When finally I got the wooden spatula behind the last teeth and just the point of it into the mouth cavity, she opened up for an instant, but before I could see anything she came down again, and gripping the wooden blade between her molars she reduced it to splinters before I could get it out again. क्या आपको लगता है कि वो उसे बर्दाश्त कर सकती है, डॉक्टर? माँ ने कहा। तुम बाहर निकलो, शौहर ने बीवी से कहा। क्या आप चाहते हैं कि वो खन्नाक से मर जाए? चलो अब उसे पकड़ो, मैंने कहा। फिर मैंने अपने बाएं हाथ से बच्ची के सर को पकड़ा और लकड़ी का ज़बान को दबाने वाला आला उसके दांतों के दरमियान डालने की कोशिश की। वो सख्त दांतों से लड़ी, लेकिन अब मैं भी गुस्से में हो गया था। एक बच्ची पर मैंने खुद को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं मुआयना के लिए गले को बेनकाब करना जानता हूँ, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आखिरकार जब मैंने आखिरी दांतों के पीछे लकड़ी का स्पाटोला डाला और मुंह में, तो वो एक लम्हे के लिए खुल गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता, उसने दोबारा मुंह बंद कर लिया और लकड़ी के ब्लेड को अपनी दाढ़ के दरमियान पकड़कर उसने उसे टुकड़ों में तब्दील कर दिया, इससे पहले कि मैं उसे दोबारा निकाल सकूं। Aren't you ashamed? The mother yelled at her. Aren't you ashamed to act like that in front of the doctor? Get me a smooth-handled spoon of some sort, I told the mother. We're going through with this. The child's mouth was already bleeding. Her tongue was cut and she was screaming in wild hysterical shrieks. Perhaps I should have desisted and come back in an hour or more. No doubt it would have been better. But I have seen at least 2 children lying dead in bed of neglect in such cases, and feeling that I must get a diagnosis now or never I went at it again. But the worst of it was that I too had got beyond reason. I could have torn the child apart in my own fury and enjoyed it. It was a pleasure to attack her. My face was burning with it. तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ उसे देखकर चिल्लाई। क्या आपको डॉक्टर के सामने ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने माँ से कहा कि किसी किस्म का हमवार चम्मच ले आओ, हम उसके साथ काम चला रहे हैं। बच्ची के मुंह से पहले ही खून बह रहा था, उसकी ज़बान कटी हुई थी और वो पागलों की तरह चीख रही थी। शायद मुझे बाज आ जाना चाहिए था और 1 घंटे या उससे ज़्यादा में वापस आना चाहिए था। कोई शक नहीं कि ये बेहतर होता, लेकिन मैंने ऐसे मामलात में कम से कम 2 बच्चों को गफलत के बिस्तर पर मुर्दा पड़े हुए देखा है, और महसूस किया कि मुझे अभी या फिर कभी नहीं तशख़ीस करनी होगी। इसलिए मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन उसका सबसे बुरा ये था कि मैं भी अकल से बालातर था। मैं अपने ही गुस्से में बच्ची को फाड़ डालता और इससे लुत्फ़अंदोज़ होता। उस पर हमला करना खुशी दे रहा था, इससे मेरा चेहरा जल रहा था।
The damned little brat must be protected against her own idiocy, one says to oneself at such times. Others must be protected against her. It is a social necessity. And all these things are true. But a blind fury, a feeling of adult shame, bred of a longing for muscular release, are the operatives. One goes on to the end. In a final unreasoning assault, I overpowered the child's neck and jaws. I forced the heavy silver spoon back of her teeth and down her throat till she gagged. And there it was, both tonsils covered with membrane. She had fought valiantly to keep me from knowing her secret. She had been hiding that sore throat for 3 days at least and lying to her parents in order to escape just such an outcome as this. Now truly she was furious. She had been on the defensive before, but now she attacked. Tried to get off her father's lap and fly at me while tears of defeat blinded her eyes. छोटी लड़की को उसकी अपनी बेवकूफ़ी से बचाना चाहिए। ऐसे वक्त में कोई अपने आप से कहता है, दूसरों को उसके खिलाफ महफूज किया जाना चाहिए। ये एक मुआशरती ज़रूरत है और ये सब बातें सच हैं, लेकिन एक अंधा गुस्सा, बालिग शर्म का एहसास, पट्टों की ताकत आजमाई की आरजू मुहर्रक बन रही थी। कोई आखिरी हद तक जाता है। एक आखिरी गैर माकूल हमले में मैंने बच्ची की गर्दन और जबड़े पर काबू पा लिया। मैंने चांदी का भारी चम्मच उसके दांतों के पीछे और उसके गले के नीचे उस वक्त तक दबाया जब तक कि वो चुप ना हो जाए। और वहाँ ये था, दोनों टॉन्सिल झल्ली से ढके हुए थे। वो मुझे अपने राज को जानने से रोकने के लिए बहादुरी से लड़ी थी। वो गले की उस खराश को कम से कम 3 दिन से छुपा रही थी और अपने वालिदैन से झूठ बोल रही थी ताकि इस तरह के नताइज से बच सके। अब वो सचमुच गुस्से में थी। वो पहले दिफाई अंदाज में थी, लेकिन अब उसने हमला कर दिया। अपने वालिद की गोद से उतरकर मुझ पर झपटने की कोशिश की, जबकि शिकस्त के आंसू उसकी आंखों को अंधा कर गए। Happy learning.